नमस्कार मु आपन स्वागत करूछि आडा 24/7 ओपीएससी चैनल रे आपण माने थंबनेल रे देखि परथुबे आज गोटे नवा डिस्कशन हमें करबा बेस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स तो जो माने प्रीलिम्स एथरा दउछति सेमान को पई काफी इंपोर्टेंट विगत किछि दिन या किछि आपण कहि परिबे ऑलमोस्ट ओवर 1 मंथ हमें सीरीज को मंजिल सीरीज को चलैछु एवं मंजिल सीरीज माध्यम रे हमें विभिन्न प्रकार रो टॉपिक्स को नहीं आसु आपण को सामना को एवं डिस्कशन मध्य करूछु तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स जदि आपण देखिबे सबु टॉपिक्स को हमें कवर करूछु बट ऑब्वियसली जते वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करबा जते वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करबा सेटा हम पई इंपोर्टेंट रहइबो एवं मु जेमति आगुरु आपण को कहिछि टॉपिक हम पई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जैक्टली तो केबे आसीबो नाही कि हमें जहा एठी डिस्कस करूचे से ही कॉपी पेस्ट है कि सेठी की पळेबो सेटा तो नुहे तो ऑब्वियसली बट जदि आपण देखिबे टॉपिक्स डेफिनेटली कवर होबो से कांसेप्ट्स गुडी को से माने कवर करिवे तनु सेही कांसेप्ट्स को नेकी आजि मध्य किछि नुवा नुवा कांसेप्ट्स एवं काफी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट्स गुडी को अछि जो गुडी कर प्रोबेबिलिटी काफी हाई जदि मु आपन कहबी तबे चलतो स्टार्ट करबा जो माने ऑनलाइन अछंती से माने रेस्पेक्टिव जहार टेलीग्राम ग्रुप अच्छी कि व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी ताको शेयर करंतु सो दैट मोर पीपल विल बी बेनिफिटेड तेणु विदाउट एनी डिले प्लीज शेयर करंतु ठीक अछि देखो आज गोटे मोटिवेशनल कोट देखिबा ए सक्सेसफुल मैन इज हु कैन ले फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स अदर्स हैव थ्रोन एट हिम ये पर्टिकुलर मोटिवेशन टी फिट होची को जगह रे जतबे आपण देखिबे गोटे कैंडिडेट आपण तले प्रिपरेशन करंती या परिवार ठु दूरे रही कि पढंती परिवार रो फाइनेंशियल सपोर्ट भी थाए तो से समय रिलेटिव फ्रेंड्स माने भी आपण देखिबे से जिंसु काफी क्रिटिसाइज करंती कि कोन पई एते पैसा खर्च करछो कोन अछि ताकू को निजे जॉब करू प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट हबो नाही तो ई सब प्रकार जिंस आपण को सुनिबा को मिले तो जदि हबनी तबे किछि करि परिबनी तो ए टाइप रो जिंस बहुत गुडे थाए बट जेतबे आपण अचीव करंती आपण सक्सेस हो किबा लाइफ रे किछि गोटे भलो करंती देन यू स्टार्ट अर्निंग देन यू कैन सपोर्ट योर फैमिली तो सेतबे सही रिलेटिव्स माने ही आसी कि देखिबे कहबे कि नै वी न्यू कि से भलो करिवो ये करिवो जाबी तो पर्टिकुलरली से जो जिंसटा होची जो क्रिटिसिज्म को आपण कंस्ट्रक्टिव भावरे नहीं कि कोभली भावरे आपण को माइलस्टोन को डिसाइड करिवे गोल को डिसाइड करिवे गोल रु डाइवर्ट हेवे नाही ये सब जिंस रो मीनिंग ये पर्टिकुलर कोटेशन रे अछि तो जो स्टोन या जो क्रिटिसिज्म आपण को ऊपर को होथला से क्रिटिसिज्म को नहीं कि आपण को निजरो जर्नी या पाथ आपण डिसाइड करिवे सो दिस इज द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोटेशन राइट तो इकोनॉमिक्स टोटल 50 बेस्ट क्वेश्चंस आज डिस्कस हमें करिवा जोटा कि हमें हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस या इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स गुडी को पर्टिकुलरली एंड ऑलमोस्ट 1 आवर ओवर द 1 आवर टॉपिक यानी कि डिस्कशन हमर रहइबो चलंतु स्टार्ट करिवा ठीक अछि शेयर कले समस्ते आसिले स्टार्ट करिवा चलो देखो तो क्वेश्चन होची ये नीर और रीर ऊपर हमें डिस्कस करिथिले बट सेही कांसेप्ट अछि विथ अ डिफरेंट डायमेंशन राइट व्हाट डज एन इंक्रीज इन नीर अफेक्ट द डोमेस्टिक करेंसी एटा को आंसर करिवे आपण माने व्हाट डज द इंक्रीज इन नीर अफेक्ट द डोमेस्टिक करेंसी प्लीज आंसर आंसर करंतु नीर बढ़िबा द्वारा कौन हुए डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करे ना डिप्रिशिएट करे से जिनसटा एक्चुअली से पचड़ुछि डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करे ना डिप्रिशिएट करे नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हम जानिछे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कौन हम डिस्कस करथिले पर्टिकुलरली जेतबेले गोटे करेंसी रो या लेट्स से डोमेस्टिक करेंसी रो जो एक्सचेंज रेट केते रहउची विथ रिस्पेक्ट टू जो इंटरनेशनल करेंसीज डॉलर हो पाउंड हो जापानीज येन हो से करेंसी सहित यार एक्सचेंज रेट कौन रहिबो ये जिनस को हमें डिस्कस करथिले नीर कांसेप्ट माध्यम
तो से नीर जिनस को आपण कहबे कि नीर increase हवा द्वारा if the near is increasing, the value of near is increasing, what does it mean? the माने होची it indicates appreciation of the domestic currency. It indicates appreciation of the domestic currency. मु आपको कहितली नीर आमे जेंति सपोज फोर मेजर करेंसीज कोन नंबर 1 लेट्स से डॉलर, लेट्स से पाउंड, लेट्स से यूरो, लेट्स से येन. ठीक अछि. तो ये चारोटी अछि एवं चारोटी रे जते परसेंटेज रो ट्रेड होउची से अनुसार आमे ताको कोन दबा वेटेज दबा. राइट. वेटेज देला परे ताको आमे बाहर करिबा कोन ना तारो एवरेज बाहर करिबा. एवरेज राइट. से एवरेज रो वैल्यू जते बळे इंक्रीज होबा आपण देखिबे. इंक्रीज माने appreciating, that means Indian currency will be stronger. इधर वैल्यू डिक्रीज करिवो से समय कोन होबो डेप्रिसिएटिंग, दैट मींस इंडियन करेंसी इज वीकर. अप्रिसिएशन माने कोन होबो अप्रिसिएशन माने एक्सपोर्ट आपनकर कमिवो एवं इंपोर्ट बढ़िवो. एटा जानिथिबे कारण आमे करेंसी को डी वैल्यू या डेप्रिसिएट कोन पई करू एक्सपोर्ट को इंक्रीज करबा पई. आमे ऑलरेडी डिस्कस करि छै ए विषय राइट. तनु से जिंस को मन रखथिबे नीर का जो अच्छी वैल्यू टी नीर वैल्यू बढ़िवा माने कोन करेंसी अप्रिशिएट होउची. अप्रिशिएट होउची माने ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ यदि आपण देखिबे कि इंडियन करेंसी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर बट आपनकर एक्सपोर्ट कमिवो इंपोर्ट बढ़िवो. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. Who appoints FSIB members and give the final nod on appointments recommended by the FSIB? FSIB के कहि परिबे. FSIB कोन? FSIB कोन की कहि परिबे कि आपनकर मने थिबो 2016 रे बैंक बोर्ड ब्यूरो गोटे गठन करा जायतिला. मने अछि बैंक बोर्ड ब्यूरो विनोद राय सीएजी रो थिले. बैंक बोर्ड ब्यूरो से बैंक बोर्ड ब्यूरो को बंद करके हमें कौन स्टार्ट कले फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो. फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो. तो जनरली जो हमर बैंक्स गुडी को अछि कमर्शियल बैंक्स गुडी को अछि तार डायरेक्टर लेवल रो अपॉइंटमेंट की करि थाए एई एफएसआईबी करि थाए. तो एफएसआईबी को क्या अपॉइंट करे ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट राइट. एटा को मन रखथिबे फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो नंबर 1. ये कौन करे ना आगुरु जो बैंक बोर्ड ब्यूरो गोटे गठन करा जायतिला से बैंक बोर्ड ब्यूरो को 2020 मसिया रे ताकू डिसॉल्व कर दिया गला. गोटे नुआ इंस्टीट्यूशन आना गला फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड जहां माध्यम रे कमर्शियल बैंक्स गुडार जो डायरेक्टर माने थांती आपण जानिथिबे एसबीआई रो हो किंबा कनाडा बैंक हो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जो कमर्शियल बैंक्स रो जते जो डायरेक्टर मानन को अपॉइंट किए करे या पर्टिकुलरली एफएसआईबी अपॉइंट करे. बट एफएसआईबी को क्या अपॉइंट करे सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक अछि. केवल एफएसआईबी रेकमेंड करिवो कि एमान को हमें एसबीआई रो डायरेक्टर मिस्टर एक्स हेवे तो एक्स को अपॉइंट करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट. फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड ब्यूरो मन रखते बेटा. नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द टिपिकल लोन रेंज ऑफर्ड बाय सिडबी फॉर एमएसएमई. एमएसएमई पाई जो टिपिकल लोन रेंज कौन थाए एमएसएमई पाई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सिडबी रो काम कौन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी. तो सिडबी जो एमएसएमई को लोन दिए तर लोन रो रेंज कौन था जनरली लोन रेंज था 10 लाख रु 25 10 लाख रु 25 करोड़ 10 लाख रु 25 करोड़. ठीक अच्छे. आउ गोटे जिनस काम करेंगे आपण एमएसएमई रो मु एटा डिस्कस करी आउ थे मुझे कहूँ
ताको रिवाइज करिवे एमएसएमई रो क्राइटेरिया एटा नोट करि नियंतु ये टॉपिक को एमएसएमई रो क्राइटेरिया दैट मींस माइक्रो रो क्राइटेरिया कोन स्मॉल रो क्राइटेरिया कोन मीडियम रो क्राइटेरिया कोन एटा को रिवाइज करी कि जीवा पूर्व माइक्रो इंडस्ट्री रो क्राइटेरिया कोन स्मॉल इंडस्ट्रीज रो क्राइटेरिया कोन एंड मीडियम इंडस्ट्रीज रो क्राइटेरिया कोन प्लीज डू रिवाइज दिस टॉपिक ठीक अच्छे से माने मैच ऑफ द फॉलोइंग पचारि पारंती कारण ई क्राइटेरिया आगुरु गोटे थिला वर्तमान क्राइटेरिया को चेंज करा जाई छै एमएसएमई रो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करी छै which of the following is a report released by the World Bank which of the आपण माने आंसर कहीं करू ना आपण मन रीटा तो चलनी कि बात्या होची एग्जाम कैंसिल हो जीवो ट्रेन तो कैंसिल हो गला इज इट सो जे पर्यंत मन रखतंदु जदि आज आसिकी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करंती राति 8 रे कि काली ओपीएससी एग्जाम कैंसिल हो गला स्टिल डोंट बिलीव अंटिल अनलेस इट इज पब्लिश्ड इन ओपीएससी वेबसाइट मो पुणी थरे कहूची जदि प्राइम मिनिस्टर आज राति 8 रे जेमती डिमोनेटाइजेशन हेतिला राति 8 रे जेमती लॉकडाउन हेतिला राति 8 रे यदि आज राति 8 रे आसी कि प्राइम मिनिस्टर कहंती कि एग्जाम हबो नाही कैंसिल हे गला डोंट बिलीव दैट अंटिल अनलेस इट इज पब्लिश्ड इन द ओपीएससी वेबसाइट जे पर्यंत ओपीएससी वेबसाइट रे आसीनी कोनोसी प्रकार कंफ्यूजन मन रे रखंतु नाही बी ए सीरियस कैंडिडेट जो यूट्यूबर्स प्रेडिक्शन करूछंती तांकर व्यूज बढ़ांतु नाही अननेसेसरी जो दिन ओपीएससी रे आसीबो आपण निजे जाई कि देखि परिबे सेटा इमीडिएटली सर्कुलेट हबो टाइम वेस्ट करंतु नाही एनीवे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन आंसर हबो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आउ किछि आउ टिके गेस करंतु आउ टिके गेस आउ टिके गेस करंतु कोन हबो कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश किए करे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक किए करे सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किए करे वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बी यस जगन दैट्स ट्रू ठीक अच्छे नेक्स्ट The International Debt Statistics Report is published by which of the following organization? Please answer. International Debt Statistics. International Debt Statistics in the sense की अंतरराष्ट्रीय लेवल रे डेप्ट यानी कि बोरोइंग आंसर करंतु इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिस्टिक्स आंसर होची आपनकर वर्ल्ड बैंक सी डेप्ट स्टैटिस्टिक्स मन रखथिबे सी आंसर सी ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी मार्केट नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी मार्केट एटी प्राइमरी मार्केट होची कोन प्राइमरी मार्केट होची आपनकर से जो कैपिटल मार्केट रे जो अछि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट राइट प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट आंसर कौन हबो कोन
सी ओवर द काउंटर एक्सचेंज देखो राइट इश्यू आईपीओ एफपीओ सब कैपिटल मार्केट रो पार्ट एफपीओ आपण कहि परिबे जोटा सेकेंडरी मार्केट रो पार्ट ओवर द काउंटर एक्सचेंज होउची स्टॉक मार्केट टाइप रो नुहे कारण स्टॉक मार्केट रो गोटे सेंट्रलाइज्ड एजेंसी अछि जेंती सेवी कंट्रोल करूची से सेकेंडरी मार्केट हो किंबा प्राइमरी मार्केट हो तो कंट्रोल की करूची सेवी करूची बट ओवर द काउंटर एक्सचेंज होउची ट्रेडेड बिटवीन टू पार्टीज मन रखते बेटा को ट्रेडेड बिटवीन टू पार्टीज विदाउट ए सेंट्रल एजेंसी विदाउट ए सेंट्रल एजेंसी एटा को मन रखते आपण कौन सी सेंट्रल एजेंसी नाही ओवर द काउंटर एक्सचेंज ठीक अच्छे जमती सपोज गोटे बिटकॉइन डिजिटल करेंसी बिटकॉइन भी ट्रेड होउची बट बिटकॉइन रो की कंट्रोलिंग अथॉरिटी अच्छी नो सेटा होची डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन रे डिसेंट्रलाइज्ड स्टेटमेंट भी पचरी पारे से मन रखते हुए डिसेंट्रलाइज्ड एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करा जाए राइट नेक्स्ट देखिए Which countries are India's competitors in the international jute market? इंडिया रे जूट कोठी उत्पादन हुए हमें डिस्कस करिचे एटाको इंडिया रे जूट कोठी उत्पादन हुए मैक्सिमम वेस्ट बंगाल ओडिशा आसाम राइट तो इंटरनेशनल लेवल रे जूट कंपटीशन रे इंडिया रो किए अछि प्लीज आंसर ऑप्शन रु आपण देखि परिबे इजीली गोटे होची हमरो भाई जे पार्टीशन हमरो ही हेतला द ब्रदर ऑफ इंडिया राइट ब्रदर लेफ्ट वाला तो नहीं राइट ब्रदर कारण बांग्लादेश रे सबुठो अधिका थाए आपण जानिथिबे तो बांग्लादेश को आपण आइडेंटिफाई जदी करिवे आउ किछि दरकार भी नहीं बांग्लादेश साउथ कोरिया फिलिपींस एंड जापान बांग्लादेश कारण जेतिकी एरिया बर्तन आम देखुचे इंडिया रे अच्छी जूट कल्टिवेशन रे ताठो अधिका एरिया पार्टीशन रे बांग्लादेश को पळैथिला या जेतेबेले 71 पूर्व जो ईस्ट पाकिस्तान थिला सेठी की पळैथिला सेटा को मन रखतिबे बांग्लादेश साउथ कोरिया फिलिपींस एंड जापान करेक्ट यस राइट आंसर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन Inflation indexed bonds are classified as what type of security in India? Please answer. Inflation indexed bonds are classified as what type of security in India? Corporate bond, government securities, municipal bond and treasury bill. Inflation index bond गुड़िको को ना रे जाना जाए मु स्लाइटली आपन को कांसेप्ट विषय कहि दूची बॉन्ड हमें डिस्कस ऑलरेडी करिचे मल्टीपल टाइम्स बॉन्ड्स होची डेप्ट इंस्ट्रूमेंट प्रथमे मन रखिबे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट माने कोन जहा द्वारा आपण लोन नहीं पारंते राइट बोरो करि पारंते डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड सिंपली आपण को मन रे प्रश्न आसी परे देखिबा को केमतिया सिंपली ए पीस ऑफ पेपर नथिंग एल्स ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट टाइप रो पीस ऑफ पेपर एग्रीमेंट से बॉन्ड रे गोटे थाए आपनकर प्रिंसिपल अमाउंट या जोटा हमें फेस वैल्यू बोली कहू यानी कि केते पैसा देके आपण बॉन्ड को परचेज करूछन लेट्स से 100 रुपीस राइट बॉन्ड रो इंटरेस्ट रेट भी थाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट जोटा हमें कहूचे लेट्स से 3% ठीक अछि ता माने 100 टका देके आपण बॉन्ड किनले लेट्स से तार ड्यूरेशन होची लेट्स से 5 इयर्स तो प्रति वर्ष आपन को 3% इंटरेस्ट तार मिलिबो ठीक अछि तो सरकार यानी कि गवर्नमेंट स्टार्टेड इशूइंग बॉन्ड टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट गवर्नमेंट स्टार्टेड इशूइंग बॉन्ड टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट एवं जनरली इंडिया रे आपन देखिबे इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड एटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रे देखिबा को मिले ठीक अछि मो आंसर तो आपन कहूची बट डिटेल एक्सप्लेन करिवे ठीक
जिते गवर्नमेंट स्टार्टेड इशुइंग बॉन्ड टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट तो समस्ते कहले कि भाई देखो इंटरेस्ट रेट अच्छी 3%, आज जदि इन्फ्लेशन हो गला 5% तो आमर तो लॉस हो गला, कारण इन्फ्लेशन 5% हैला माने इंटरेस्ट रेट आपण केते एक्सपेक्ट करिवे 5% करबा कथा, बट आपण को जो एक्जिस्टिंग बॉन्ड अच्छी 3% मिलू, कारण जनरली देखा मिले जो नुआ बॉन्ड इश्यू करा जाए 5% यानी कि इन्फ्लेशन रेट जति की हुए सेतिकी रे आपण को इश्यू करबा को पड़े, नले केही परचेस करिवे नाही, कारण इन्फ्लेशन तो बड़ी बड़ी चलची राइट। तो इन्फ्लेशन फ्लक्चुएशन जतबेले होउची से टाइम रे जनरली इन्फ्लेशन अपवर्ड मूवमेंट ही था, बहुत कम समय था कि डाउनवर्ड मूवमेंट था, तो अपवर्ड मूवमेंट था, तेणु पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट और टू परचेज बॉन्ड that were issued by the government। तो सहित सरकार गोटे नुआ स्कीम नहीं कि आसिले कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड गवर्नमेंट इश्यू करिवो जारी करिवो that will be on the basis of this inflation indexed। now question होची what is this inflation indexed, slightly बुझिबा पई चेष्टा करिवे what is this inflation indexed। inflation indexed माने सपोज आपण 100 रुपीज रो बॉन्ड परचेज कले तार इंटरेस्ट अच्छी 3%, तार इंटरेस्ट अच्छी 3%, ठीक अच्छी। अब इंटरेस्ट 3% जिते अच्छी इन्फ्लेशन हो गला 5%, तामाने आपनकर लॉस होउची, बट गवर्नमेंट कौन कहला कि इंटरेस्ट रेट तो 3% जेहेतु अच्छी किसी प्रॉब्लम नहीं, जिते इन्फ्लेशन 5% होउची आमे से 5% कौन करिवा प्रिंसिपल रे ऐड करिवा, तामाने 100 टंका दी केतले आपण परचेस करथिले 5% इंटरेस्ट, तेणु एथि ऐड करंतु आपण 5 केते ही जीवो 105। तो वर्तमान आपण को जो इंटरेस्ट मिलिवो 3% नॉट ऑफ दिस 100 रादर ऑफ दिस 105, बुझिउची जिनसटा रादर ऑफ दिस 105, ठीक अछि। ता माने जो इन्फ्लेशन चेंज होउची, इन्फ्लेशन को नेकी हमें कोठी एडजस्ट करूचे प्रिंसिपल अमाउंट रे एडजस्ट करूचे। तो गवर्नमेंट भी कहला देखो जदि ये 3 रो यदि 2 हे गला तबे से 2 भी हमें एठी ऐड करिवो एवं आपन को जो इंटरेस्ट मिलिवो से 102 रो 3% मिलिवो। तो लोक पुणी कहले इन्वेस्टर पुणी कहले कि भाई देखो जदि 102 हे जाउची, ठीक अछि, हमें 3% मिलुथला हमको, तो सॉरी यार 98 ही जो एटा, सॉरी 98 ही जो 98 रो 3%, पुणी समस्त कहले कि भाई देखो 100 टंका रे हमें किनिथिलु, हमें तो बिकिला वाला को हमको 98 मिलियो। तो गवर्नमेंट पुणी थरे कहला कि नहीं ठीक अछि, जेतबे आपण बिकुचंदी ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी बिकिला बेले हम कोन करिवु हायर साइड आपण को दउ, जदि प्रिंसिपल इज लार्जर देन द एडजस्टेड अमाउंट तबे आपण को ये प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल ही मिलिवो, बुझिउची जिनसटा। तेणु को केस रे भी इन्वेस्टर लॉस नु है जदि जने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करूची या बॉन्ड रे इन्वेस्ट करूची। कांसेप्ट बुझियाला इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड कांसेप्ट बुझी हला ना नहीं ना, पुणी थरे रिपीट करिवि, माउ थरे रिपीट कर दूची। 100 टंका प्रिंसिपल अमाउंट 3% थिला आपनकर कोन इंटरेस्ट, तो 3% रो तकु 5% हेगला इन्फ्लेशन, तो 5% को एडजस्ट केमती करा जीवो 100 + 5, बर्तन जो 3% आपन को इंटरेस्ट मिलिवो 105 रो 3% मिलिवो, 100 रो नुहे। तो ये होची फर्स्ट जिंस। सेकंड जिंस जदि इन्फ्लेशन कम हुए ता माने सपोज 3 रो 2 हेगला, तबने आपण एडजस्ट करिवे कोठी 100 - 2 98 ही जीवो। से केस रे गवर्नमेंट कहला नहीं ठीक अछि 98 हमें दबुनी, जेतोले आपण तो बिकिवे आपण पाइबे 100। सो इट्स ए काइंड ऑफ ए सिक्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, करेक्ट। नेक्स्ट, which sector in India is most commonly associated with disguised unemployment? Disguised unemployment, easy question। एग्रीकल्चरल सेक्टर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एवं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रे कौन था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कौन था 0। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट कौन ना, सपोज 5 जन ऑलरेडी गोटे लैंड रे काम करूचंदी, 5 + 1 आपण कले
ये होची मार्जिनल addition to total, addition of one labor with the total, तेणु सेटा होची कोन मार्जिनल एवं यार कंट्रीब्यूशन केते जीरो काहेकि ना 5 जण जेतिकी प्रोडक्टिविटी दउथिले 6 जण भी सेतिकी प्रोडक्टिविटी दउछन, तेणु जदि आकु बाहर करि नियंती सेटु तार कंट्रीब्यूशन जीरो, सेति पय कोहा जे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट, what is the primary aim of the National Skill Development Corporation? Please answer. Primary aim of the National Skill Development Corporation. National Skill Development Corporation main aim कौन? Aim होची simply to promote skill development by catalyzing the creation of large quality and for profit vocational institution. Large quality profit vocational institution. Okay. B. Why is tax buoyancy particularly important for India? Tax buoyancy particularly important for India. Answer करिए बेटा. No issue स्वागतिका. Good morning. Tax buoyancy माने कोन? Tax buoyancy होची simply आपनो आमे डिस्कस करथिले आपनकर बनेथिबो लाफर कर्व को नै के लाफर कर्व रे आमे डिस्कस कोन करथिले ना टैक्स रेट अधिक जेतबे आपण रखुचंती तो ठीक अछि फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम या फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट मोर रेवेन्यू, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड द रेवेन्यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग. काहेकि रेवेन्यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग? बिकॉज पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग द टैक्स. सेटा को मन रखते पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग द टैक्स, टैक्स देबे नाही. सेति पई टैक्स बुओयेंसी माने कोन? टू एनहांस टैक्स कंप्लायंस. आमे जीएसटी कोन पे आनी कि आसिले? एक तो जीएसटी हेले कोन? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आपण जानि चंदी. तो गोटी जगह टैक्स इंपोज हो, दैट इज द रीजन इट इज इजी. एंड टैक्स कंप्लायंस भी करा जिवो, सित पे आमे कोन दोउचे? डिफरेंट इंसेंटिव भी दोउचे. ता माने लोको टैक्स न ठकीगी अधिका टैक्स देबे. टैक्स कंप्लायंस एंड वाइडन द बेस. टैक्स बेस माने कोन? जो टैक्स कलेक्शन अमाउंट, टैक्स बेस अमिस्ट इकोनॉमिक चेंजेस एंड रिफॉर्म्स, सेटा को हमें कहूछु टैक्स बुओयेंसी. सिंपल गोटे कांसेप्ट टैक्स बुओयेंसी माने होची एटा. वाइडन द टैक्स बेस अमिस्ट इकोनॉमिक चेंजेस. ठीक अछि. नेक्स्ट, how are treasury bills generally issued? How are treasury bills are generally issued? Answer करिए आपण. ट्रेजरी बिल कौन? देखो तो ट्रेजरी बिल होची सिंपली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. मन रखते बेटा, ट्रेजरी बिल होची गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नंबर 1. नंबर 2, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द मनी मार्केट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द मनी मार्केट. बुझियो जिनसेटा. तो मनी मार्केट जदि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट एटा, तबे से कहूची
हाउ दीज आर इश्यूड ठीक अछि आपनकर मन थिबो मु आपन को जीरो कूपन बॉन्ड विषय डिस्कस करथिले मन अछि आपनकर जीरो कूपन बॉन्ड कार मन अछि जीरो कूपन बॉन्ड मु डिस्कस करथिले आपन सहित कार मन अछि जीरो कूपन बॉन्ड होची कूपन होची जीरो कूपन कौन कूपन होची इंटरेस्ट जस्ट अभी जो डिस्कस करूली कि 100 रुपीज रो बॉन्ड रे 3% इंटरेस्ट तो जोठी इंटरेस्ट 3% अच्छी से तो बॉन्ड हो गला नॉर्मल बॉन्ड जोठी इंटरेस्ट न थाए सेटा को आमे कहू जीरो कूपन बॉन्ड कूपन होची तार जीरो यानी कि इंटरेस्ट हो जीरो तबे जणे एठी इन्वेस्ट ताले काहे करियो तो रीजन होची जितेबाला 100 रुपीज तार फेस वैल्यू अच्छी फेस वैल्यू से परचेस करिवो द वैल्यू वुड बी लेस देन 100 माने 100 टंका रे कम देकी से किनिवो बट बिकिला बेले ताकू 100 टंका मिलिवो सपोज से किनिला बेले केते करिवो 96 रुपीज लेट से बिकिला बेले केते पाइवो फेस वैल्यू 100 रुपीज तमाने डिफरेंस केते रुपीज 4 इज द प्रॉफिट तो ट्रेजरी बिल एग्जैक्टली सी जिंस ट्रेजरी बिल होची कोन at a price less than their face value at a price less than their face value यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड आमे ताकू कहि परिबा काहाकू पर्टिकुलरली ट्रेजरी बिल को आमे कोन कहि परिबा जीरो कूपन बॉन्ड ठीक अछि बुझी हला कोनोसी डाउट नाही नेक्स्ट देखिबा Which of the following statements is true about commercial papers? Answer करंतु ऑलरेडी हमें commercial paper विषय डिस्कस करिचे आंसर करंतु commercial paper आंसर कौन हो कमर्शियल पेपर मु आपन सहित डिस्कस करथिली कमर्शियल पेपर होची कमर्शियल बिल जोटा में कहूचे दुईटी ट्रेडिंग क्लास थिबे दुईटी ट्रेडर थिबे सो दुईटी ट्रेडर का भितरे गोटे कमर्शियल पेपर गोटे डील साइन हुए जो पेमेंट डिफर्ड पेमेंट हिसाब रे तीनटा एलिमेंट थिबे तीनटा एंटिटी थिबे ए बी सी लेट से आपनकर मन थी एटा कहितली सपोज ए को बी को पेमेंट करिवार थिला बी को सी को पेमेंट करिवार थिला तो बी सी को डायरेक्टली न करिकी बी ए को कहबो तू डायरेक्टली सी को पेमेंट कर दे ठीक अछि तो सेहित पई बी इशू करिवो कोन गोटे ट्रेड बिल ताको आपण कहि परिबे ट्रेड बिल कहा ना रे ए ना रे कि ए विल पे सी द सेम अमाउंट जति कि बी सी को दवा को चाहूतला ठीक अछि तो सेहित पई एटा होची ट्रेड बिल ए ट्रेड बिल सपोज ए पाखरे सेति की पैसा नाही इंस्टेंटली ए अप्रोच काहा को करिवो गोटे कमर्शियल बैंक को तनु ए अप्रोच जतल कमर्शियल बैंक को करिवो बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ ए टू सी बैंक विल पे सी ऑन बिहाफ ऑफ ए तनु सेटा हे जिवो कमर्शियल बिल एवं बैंक गोटे सिंपली कौन नब गोटे कमिशन तेणु सेटा को आमे कहि परिबा कोन दे आर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट अनसिक्योर्ड माने कोन कोनोसी सेमती जेमती आपण त लोन गोटे नउचंदी सपोज आपण घर पई लोन नेले आपण से लैंड रो पेपर नै जीवो बैंक सेटा होची सिक्योर्ड मॉर्गेज दउचंदी एठी कोनोसी मॉर्गेज न थाए सेत पे सेटा को अनसिक्योर्ड बोली कहा जाय अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट ये प्रॉमिसरी नोट माने कोन ये ट्रेड बिल जोटा इशू करा गला
कि बी कौन कला ऑन द बिहाफ ऑफ ए जोटा इश्यू कला कि ए प्रॉमिस करूची कि ए कौन करिवो सी को पेमेंट करिवो जेति कि ए को बी को दवार थिला तीनटी एलिमेंट भितरे बुझियो जिनसटा माने आपन को सांग आपन को पे करिवार थिला आपण आउ जण को पे करिवार थिला ठीक अछि आपन को जे पे करिवो ताकू आपन कहले कि भाई मते डायरेक्टली न देई कि तू मो से सांगटा को दे दे राइट तनु इटा एते इनफॉर्मल तो हुए नी काहे कि ना ऑब्वियसली ट्रेड जो माने करंती सपोज स्मॉल ट्रेडर्स माने से माने तांको भितरे एई भली भाबरे ट्रांजैक्शन करंती तो फर्स्ट जेतबले से जो ट्रेड बिल्ट इश्यू होबो सेटा को हमें प्रॉमिसरी नोट भी बोली कहिबा प्रॉमिसरी नोट माने कि जणे जण को प्रॉमिस करूची टू पे दिस मच अमाउंट इन नियर फ्यूचर सितपे देखो प्रॉमिसरी नोट बोली कुआ जाय तो ये होची कोन फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एवं पर्टिकुलरली मनी मार्केट शॉर्ट टर्म ठीक अछि शॉर्ट टर्म नेक्स्ट देखिबा what happens when domestic currency depreciates while servicing debt in foreign currency answer करंतु easy question already multiple times हमें discuss करिचे देखंतु domestic currency depreciate होउची while servicing debt in foreign currency तो माने कोन आपण गोटे लोन नै चंदी foreign currency रो सपोज आपण गोटे लोन नहीं थिले गोटे डॉलर रो आगुरु केते थिला 60 रुपीस थिला गोटे डॉलर लोन नहीं थिले 60 रुपीस थिला वर्तमान डेप्रिसिएट हला फल रे सेटा हे गेला 70 रुपीस तो आपण को केते दबा को पड़िबो 10 रुपीस एक्स्ट्रा दबा को पड़िबो सित पई आंसर होची कोन द बोरोर पेज मोर जे बोरो करे थिला ताको अधिका दबा को पड़िबो वर्तमान डेप्रिसिएट हवा फल क्लियर किसी डाउट नहीं बी हो जे आंसर बी इज द आंसर एग्जांपल देखि मैं आपन को बुझेली एटा व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद द इश्यूएंस ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स मसाला बॉन्ड या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हमें डिस्कस करिचे कि जो कॉर्पोरेट्स गुडी के अछन इंडिया रे सेमानु को हमें अलाउ करूछु कोन इंटरनेशनल मार्केट रु सेमाने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जारी करी की लोन नहीं परिबे या बोरो करी परिबे राइट तो आमे एटा को चाहिथिले डॉलर रे भी करी परथांदे आमे रूपी डिनोमिनेटेड काहे की करूचे कोन आंसर हे पारे आंसर होची जदि डॉलर हेइतांदा तबे करेंसी फ्लक्चुएशन हेइतिले कोन हेइतांदा सपोज करेंसी फ्लक्चुएट कला तो आपनकर लोन अमाउंट भी डॉलर वैल्यू भी सेमती फ्लक्चुएट करिवो तनु फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करिवा पई करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क को मिनिमाइज करिवा पई आमे कोन कले ताकू रूपी डिनोमिनेटेड कले देखंतु गोटे डॉलर 60 टंका थिला ठीक अछि आपण तले गोटे डॉलर आपण लोन आनिले मसाला बॉन्ड रे आपण को 60 मिलिला पुणी गोटे डॉलर लोन कले आपण को 70 मिलिला ए केस रे तो बहुत बढ़िया आपण को अधिक पैसा लोन मिलुची बट अगेन यू हैव टू रीपे इट बैक जेतबेले ये डॉलर टी एही जीव लेट से 80 आपण को केते दवा को पड़िबो 80 टंका दवा को पड़िबो नै थिले केते 70 बुझियो छी जिनसडा तेनु करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क को मिनिमाइज करिवा पे अवॉइड करिवा पे हमें सिंपल कोन कले भाई जो माने रुपी रे लोन देई परिबे से माने केवल बॉन्ड रे इन्वेस्ट करंतु हु कैन इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आंसर करंतु एनपीए रिलेटेड क्वेश्चन एटा Who can initiate the insolvency resolution process for companies and limited liability partnerships? Limited liability partnership, suppose गोटे कंपनी लोन नहीं ची गोटे फार्म ठो अलगा गोटे फार्म ठो लेट से या गोटे बैंक ठो ए कंपनी लोन नेला काठो बैंक ठो बर्तन ए ताकू रीपे बैक करी पारु नहीं लेट से विजय माल्या
Vijay Mallya is not repaying back or is not able to repaying back to those Indian banks. तो जो insolvency resolution process अच्छी ताकू इनिशिएट की करि परिबे ईदर विजय माल्या करि परिबो नले बैंक करि परिबो सेत पे ईदर द डेटर और द क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कोन आपण जानिथिबे कंपनी जतबे लॉस रे कंसिस्टेंटली चले कंपनी कैन एग्जिट द मार्केट तो मार्केट से एग्जिट करिवो देन सेतबे जो कंपनी रे जो कॉम्प्लायंसेस अछि जो रूल्स अछि कंपनीज एक्ट जो आपनकर अछि 2013 रो से 13 अनुसार कहूची कि आपन को इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन करबा को पड़े कारण यदि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन न कले ऑब्वियसली से एनपीएसडी से बैंक खाता रे गडी चलथिबो अंटिल अनलेस बैंक राइट्स ऑफ दैट लोन राइट ऑफ माने कोन बैलेंस शीट रो गोटे एनपीए को हटेवा इंटेंशनली राइट ऑफ हटेवा माने रिकवर हेई नथिबो बट आपन सो ही करबा को चाहू नांदी बैंक रो लायबिलिटी अछि बोली आपन सिंपली तक बैलेंस शीट रो सेटा को डिलीट मार देले सेटा होची राइट ऑफ लोन्स बुझिउची जिन सेटा तनो क्रेडिटर एंड डेटर दुई जण जाको will be able to do this or initiate this process. Next, which constitutional amendment act established GST in India? Easy question. Which constitutional already हमें discuss करी छे आंसर करंतु if possible चारोटी जाकर आंसर 73rd कोण 74th कोण 101 कोण 102 कोण आंसर होची obviously 101. 102 is related to what? 102 is related to what? (101) तो आंसर 2 is related to what? देखो अमेंडमेंट गुड़िक पचरा जाऊ अछि कंटिन्यूअसली पॉलिटी रे आपनकर प्रीलिम्स रे अमेंडमेंट पचरा जाऊ अछि अमेंडमेंट गुड़िक देखि नेबे बहुत ही इंपोर्टेंट अमेंडमेंट गुड़िक जाग्ञ से नहीं दैट इज करेक्ट 101st and 2779A जोटा कि आर्टिकल को चेंज कराइथिला थ्रू वन अमेंडमेंट बट 102nd कोन करेक्ट 37 लोकल गवर्नमेंट 74th होची म्युनिसिपैलिटी अर्बन लोकल यस ऑफ कोर्स 102nd होची बैकवर्ड क्लास में करेक्ट ठीक अछि नेक्स्ट at which stage or what stage कहि परिबे GST is calculated at what stage GST is calculated at what stage GST is calculated answer please देखो तो सिकोची at the point of manufacturer only at the point of retail level at each stage of value addition and at the point of export answer yes at each stage of value addition simply आपण देखिबे गोटे एग्जांपल छोटा एग्जांपल मैं आपन को देबी सपोज गोटे जगह रे गोटे प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर होची मैन्युफैक्चरिंग वाला तार इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल्स गुड को परचेस करूची रॉ मटेरियल रे भी से जीएसटी दउथबो तो जीएसटी देला परे से प्रोडक्ट को परचेस कला परे सेटा को बिकुची काहा को गोटे कस्टमर को बिकुची लेट से तो टैक्स एक्चुअली जतबे एठी इंपोज होची कलेक्ट होची डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जोटा में कहूचे बट एठी जो टैक्स ऑलरेडी रॉ मटेरियल रे देची से ताकू इनपुट टैक्स क्रेडिट माध्यम रे ताकू से रीएम्बर्स करि परुची बुझौची जिनसटा त माने ऑलरेडी जेतु डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एटा तनु इ जो जगह रे कलेक्ट हेइथिबो सेटा को इनपुट टैक्स क्रेडिट माध्यम रे ता पाखो रिटर्न आसी जाए तेणु टैक्स अल्टीमेटली कलेक्ट कोठी हुए डेस्टिनेशन जोठी कंजप्शन हुए से प्रोडक्ट जोठी कंज्यूम हुए
ठीक अच्छे नेक्स्ट which of the following condition disqualifies a notice of motion for reduction of demand आंसर करंतु which of the following conditions disqualifies a notice motion for reduction of demand एटा सिंपली होची कोन ना इट रेफर्स टू ए मैटर अंडर adjudication by a court disqualifies a notice motion for reduction of demand adjudication by a court ठीक अछि नेक्स्ट what is the primary objective of operation twist आंसर करिवे primary objective of operation twist इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्लीज आंसर ऑपरेशन ट्विस्ट कौन देखो ऑपरेशन ट्विस्ट माने कौन मैं आपको कहि दउछि फर्स्ट ताको टिके बुझिया पे चेष्टा करिवे गोटे होछि शॉर्ट टर्म आउट होछि लॉन्ग टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट आउट होछि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ठीक अछि जेतेबेले सपोज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एक्सरसाइज करूछि से कोन करूछि रेपो रेट माध्यम रे लेट्स से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करूछि रेपो रेट माध्यम रे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करूछि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कले कोन होबो ना कमर्शियल बोरोइंग कमर्शियल बैंक्स रे जो बोरोइंग अछि से कॉस्टली होउछि इज इट सो यस कमर्शियल बैंक रो बोरोइंग होउछि कॉस्टली तेनु कॉस्टली होवा फल रे कमर्शियल बैंक कम लोन दोउछि अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक जो कंज्यूमर को कस्टमर को आम एमती लोन नौचे बैंक रु से जगह भी आमको हायर इंटरेस्ट रेट पे करबा को पड़ुछि फल रे कोन होउछि बोरोइंग कम होउछि कंट्री रे बोरोइंग कम हवा फल रे जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करूछि सेटा भी गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करूछि इन्वेस्टमेंट कम करूछि तो सेति पई आरबीआई को कहा गला कि एवरी टाइम इफ यू चेंज द लाइक रेपो रेट प्रॉब्लम होची इन्वेस्टमेंट इज डिक्लाइंड इन द इकोनॉमी एवं इकोनॉमी रो ग्रोथ रेट कोन होची स्ट्रगल करूची यानी कि फ्राजाइल है कि पुनी तळु को केतेबेले जाउची पुनी ऊपर को जाउची पुनी तळु को जाउची सो वी नीड ए कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट तनु आरबीआई कोन कहला कहला ठीक अछि हम ओटा ऑपरेशन ट्विस्ट करबा कोन ऑपरेशन ट्विस्ट ना शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को हमें इंक्रीज करिवु टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को हमें कौन करिवु कम करिवु सो दैट जो माने लंबा समय पे लोन नउचंती लेट से जो माने 20 इयर्स ऑब्वियसली जो माने जो कंपनी गुडी को एमएनसीज गुडी को अछंती या लेट से जो इन्वेस्टर या बड़ बड़ सपोज एलएनटी बैंक रो जदी लोची लोन एलएनटी रो मेन काम कोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप से करूची तनु सी 2 वर्ष 5 वर्ष पे लोन नबने से 20 इयर्स 30 इयर्स पे लोन नबो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तेणु ऑपरेशन ट्विस्ट माने बूस्ट द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कमिवो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बढ़िवो सिट पय सेटा को ऑपरेशन ट्विस्ट कुआ जाय कारण ट्विस्ट एथि पय कुआ जाउची ना साइमल्टेनियसली यू आर डूइंग व्हाट द सेम थिंग आई मीन साइमल्टेनियसली यू आर डूइंग द टू थिंग्स पर्टिकुलरली गोटे जगह रे आपण इंटरेस्ट रेट को कम करूचंती आ गोटे जगह रे इंटरेस्ट रेट को आपण बढ़ाउचंती This is what the operation twist. बुझियो जिनसडा मन रखते बेटा को आउट अछि एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ये कांसेप्ट को देखि नेबे एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन मु डिस्कस करूनी आपन को पई छाडुची जदी बुझी न होबो लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास रे मते पछरी मु कहि देबी नेक्स्ट व्हिच कमिटी recommended the establishment of small finance bank which committee recommended the establishment of small finance bank please answer which committee
आंसर होची कोन आंसर होची नचिकेत मोर कमिटी 2014 रे ए कमिटी रेकमेंड करथिला से समय रे द आरबीआई गवर्नर वाज रघुरामजी राजन द आरबीआई गवर्नर वाज रघुरामजी राजन तांको समय रे गोटे कमिटी गठन कराइथिला नचिकेत मोर कमिटी एवं से ही रेकमेंड करथिला द स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक ये सब रिकमेंडेशन नचिकेत मोर कमिटी द्वारा करा जायतिला ठीक अछि नेक्स्ट what is the minimum paid of equity capital required to set up one small finance bank minimum paid of equity capital to set up small finance bank आपण गोटे small finance bank set up करिबा पई चाहुचंदी what is the need of this equity capital please answer 100 crore मन रखते बेटा को 100 crore स्मॉल फाइनेंस बैंक रो मिनिमम पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल हु कैन सेट ऑफ एन स्मॉल फाइनेंस बैंक हु कैन सेट ऑफ एन स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आपण देखिथिबे उज्जीवन आई गेस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो को माने गोटे सेटअप करि परिबे आंसर होची individuals professionals with 10 years of experience in finance NBFCs microfinance companies and local area banks so these people can establish small finance bank next which financial products can payment banks distribute which financial product can payment bank distribute पेमेंट बैंक आपनकर मने थियो म आपनको पचारथिली कहिथिली बेटा को पेमेंट बैंक केबे भी क्रेडिट कार्ड इशू करिवो नाही कि लोन दबो नाही ठीक अछि क्रेडिट कार्ड इशू करिवनी लोन दबो नाही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स माने कोन ऑब्वियसली लोन बॉन्ड माने ही लोन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से इतपई को आ जाए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट लार्ज बिजनेस लोन दबार प्रश्न ही उठु नाही तेणु म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपण से बिकी पारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बिकी पारे मन रखते बेटा को ठीक अछि आंसर होची बी पुन थरे कहबी क्रेडिट कार्ड इशू करि परिबो नाही पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करि परिबो नाही काहे कि ना लोन देई परिबो नाही क्रेडिट माने कोन लोन ठीक अछि नेक्स्ट Which entities are eligible to set up payment banks? Which entities are eligible to set up payment banks? Answer. Individuals, professionals, NBFCs, mobile companies, cooperatives owned and controlled by residents. मोबाइल कंपनीज भी अच्छी मन रखती बेटा को एयरटेल पेटीएम एयरटेल पेमेंट बैंक मोबाइल कंपनीज व्हेन वुड एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन वुड एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करंतु इजी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करिचे ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी माने कोन मनी सप्लाई को इंक्रीज करिया पई चाहुचंती इन्फ्लेशन रे कोन हुए डिक्रीज करू मनी सप्लाई राइट ड्यूरिंग ए रिसेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन व्हेन द इकोनॉमी इज ओवरहीटिंग व्हेन द गवर्नमेंट हैज ए फिस्कल सरप्लस सो ऑब्वियसली आंसर कोन
रिसेशन और इकोनॉमिक स्लो डाउन रे आपण मनी सप्लाई को इंक्रीज करबा पई चेष्टा करिवे बेसिक कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन रे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रिसेशन रे एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट what is the role of the central bank in controlling money supply what is the role of the central bank in controlling money supply please answer easy question मनी सप्लाई द्वारा से कौन करिवो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिचुएशन को टैकल करिवो या हैंडल करिवो दैट्स इट मनी सप्लाई कौन करिवो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल करिवो हैंडल करिवो मैनेज करिवो आंसर होची बी आंसर होची बी नेक्स्ट which type of monetary policy is likely to be used during a period of high inflation which type of monetary policy will be used during the period of high inflation please answer high inflation समय रे को प्रकार monetary policy की यूज करा जीवो हाई इन्फ्लेशन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी डिफ्लेशन या रिसेशन समय रे एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी राइट फिस्कल स्टिमुलस पॉलिसी माने कोन इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिस्कल शब्द यूज होउची नेक्स्ट Which index is traditionally used to denote headline inflation? Headline inflation. Answer करंतु. Which index is used to denote headline inflation? Yes. दुईटी अच्छी गोटे हेडलाइन इन्फ्लेशन आउट अच्छी कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन आउट अच्छी कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन रे कौन था इंक्लूडिंग जोटा आपनकर फूड एंड फ्यूल कोर इन्फ्लेशन रे कौन था फूड एंड फ्यूल को हमें डिडक्ट करू थैंक यू स्वागतिका So headline inflation is traditionally yes WPI wholesale price index मन रखते बेटा को wholesale price index next core inflation exclude what just मु डिस्कस करी थिली core inflation excludes what please answer core inflation excludes what आंसर करंतु एटा जस्ट डिस्कस करूथली फूड एंड फ्यूल को हम रखुचे कोठी हेडलाइन रे कोर रे माइनस करूचे एटा ठीक अछि आंसर होची ए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉजेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन Which are the factors causes demand pull inflation? Please answer. Demand pull inflation माने कौन? Demand side. That means demand या aggregate demand greater than aggregate supply. Demand pull inflation. Demand is more than the supply. तो बेटी को जगह टा को particular point रे demand will be more.
होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग हेले कोन हबो, सप्लाई शॉर्टेज हबो, सप्लाई विल कम डाउन। जेमती बात्या आसीबा पूर्व आपण देखिथे न्यूज चैनल रे ऑलरेडी 7 दिन पूर्व बात्या स्टार्ट हेलेनी, तो जो वेंडर्स माने अछंती दे विल स्टार्ट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। जस्ट बात्यार पाख समय रे गोटे 2 दिन पूर्व ही हमें बिकिबू विथ ए हायर रेट। आलू 35 टंका रु 50 टंका करके बिकुचंदी। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, अगेन सप्लाई साइड फैक्टर, सप्लाई साइड कांस्टेंट। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस हेले कोन हबो, डिमांड कमिबो, राइट। सो डिमांड बढ़िबो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हेले कोन हबो, एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यदि गवर्नमेंट अधिका एक्सपेंड करे माने एक्सपेंडिचर करे यानी स्पेंड करे, so then people will have more money and people start demanding more goods and services. D is the answer. Sorry, C is the answer. Next, what is the maximum borrowing limit under the marginal standing facility for banks? Maximum borrowing limit, answer करिवे। Maximum borrowing limit under MSF, marginal standing facility. Marginal standing facility माने कौन? Marginal standing facility माने कौन? आपनकर मन थिबो मु डिस्कस करूथली आपनक सहित एसएलआर रे हमें जनरली कौन रखुचु, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, कैश ये सब रखुचे। तो नॉर्मल हमें जो रेपो यूज करूचे यानी कि कमर्शियल बैंक यूज करूचे रेपो टू बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, बेले बेले से रेपो अगेंस्ट हमें कौन यूज करू, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बेले बेले ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ता पाखरे नॉर्मल समय रे न थाए। So now commercial bank has to use government securities from this SLR quota. तो से SLR quota रो जतबेले से government securities को use करिवो, that is not coming under the repo, rather it is coming under the MSF, marginal standing facility. बुझियो जिनसडा तनु से समय रे very short term पई ताकु जो allow करा जाउची तो window और केते लिमिट पर्यंत अछि सेटा होची 2% ऑफ द एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। एटा देखो एटा जनरली चेंज हुए, राइट। मजरे एटा आई थिंक एटा टिके क्रॉस चेक करि नेबे। इनिशियली जतले इंट्रोड्यूस करा गला एटा को 1% करा आइतला, तापर 2% थिला, मे बी मोर जति कि मने पडुची ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन एटा को 3% करा जाइथिला। तो टिके चेक करि नेबे कि मैक्सिमम लिमिट केते, ठीक अच्छे, नोट करी रखी था। आफ्टर दिस क्लास एमएसएफ रे केते लिमिट दिया जाउची बैंक को बोरो करिबा पे, एग्जैक्ट फिगर को थरे देखि नेबे एबे लेटेस्ट वाला, ठीक अच्छे। कॉन्सेप्ट बुझिले जस्ट एटा को चेक करी नेबे एबे आरबीआई केते लिमिट सेट करिछि। नेक्स्ट देखिबा, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर, आंसर करिवे। Key difference between CRR and SLR. Easy question. Easy question. CRR is held by the banks themselves and SLR is kept with RBI. दुईटी जाको monetary tools यानी कि monetary controlling, money supply controlling tools, but one with RBI, one with themselves, right? So answer is what? Answer होची B.
Next, what does a current account deficit indicate? Multiple times discuss करी चाहे current account deficit कहले हमें कौन बुझू कौन indicate करे current account deficit current account रे कौन था goods services major component है गुड़ी को deficit माने कौन you are importing more than export. Importing more means what? You are paying more dollar. That means dollar is going outside, more dollars flowing out of the country than flowing in. More dollar is flowing out of the country than flowing in. Done. B. Next. Which of the following is included in the current account? Which of the following is included in the current account? Foreign direct investment, purchase of foreign stocks, exports and imports of goods and services, sale of domestic properties to foreign entities. Answer होची कौन? Capital account कौन होची? Investment. External commercial borrowing and borrowing from bilateral or multilateral institutions like IMF and World Bank. तो इटा देखो foreign direct investment capital account, purchase of foreign stocks ता माने kind of a investment. D देखो sale of domestic properties again investment. Answer होची कौन? C. Goods and services, visible and invisible. Multiple times हमें करी छे. Next, if Indians are buying properties in US but Americans are not buying properties in India, which type of deficit is occurring? Answer करो. If Indians are buying properties in US and Americans are not buying properties in India, Indians माने US रे property किणुचन, that means investing, right? But Americans India रे property किणु नांदे, obviously कहीं किणिवे, India रू ही छाड़ी की लोगों पढ़ुचन तो American कहीं के थी ऐसी रही है भाई, ठीक है जी? तो Indians माने US रे किणुचन दे, but US वाला India रे किणु नांदे, तो इटा को कोई type रे deficit हमें कोई बा, कारण that means डॉलर आपनकर फ्लो करूची कोन? आउटफ्लो इज मोर देन द इनफ्लो. बुझियो जिनसेटा आउटफ्लो इज मोर देन द इनफ्लो. बुझियो जिनसेटा तो एटा को कोन कुआ जीवो? एवं इन्वेस्टमेंट कहां अंडर है? कैपिटल अकाउंट डेफिसिट. बी. कैपिटल अकाउंट डेफिसिट. Answer करो. Next, what can be a consequence of a persistent current account deficit? Persistent current account deficit. Options गुड़ी को देखिए. Increase in foreign investment, potential depreciation of the domestic currency, increase in the domestic saving, strengthening of the economy. Let me explain this. Current account deficit माने हमें discuss already करी छे. Import is greater than export. That means you are purchasing more goods and services from abroad. Number one. Current account deficit जदि आपण देखिले अधिका import करूछन, that means you are demanding more dollar. Dollar को अधिका demand करूछंदी, that means the price of dollar is increasing. That means dollar is appreciating and domestic currency is depreciating, right? तो answer कौन होगा? Potential depreciation of the domestic currency. Indian currency weak है ही जीवो. Indian currency will start depreciating more and more against the dollar.
Next, which is the purpose of the prospectus according to the SEBI guidelines? Prospectus. SEBI रो काम कौन? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करेगा, जिमती अनफेयर फेवर जिमती कहा को न मिले, गोटे लेवल प्लेइंग फील्ड समस्त को मिले, सेटा होची SEBI रो काम। सेत पे आपण देखिबे बेले बेले गोटे टर्म आपण देखिबा को मिलेबो इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग माने कौन? यदि आपण किछि इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं जाउचंदी, सो ऑब्वियसली यू विल बी एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। तो से इनसाइडर ट्रेडिंग या लेवल प्लेइंग फील्ड को एंश्योर करबा पई SEBI गाइडलाइंस देता है। ठीक अछि, तबे एठी आंसर कोन? टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन्वेस्टर इवैल्यूएट द कंपनी। समस्त पई सेम इंफॉर्मेशन रहयो, कि अनफेयर अनड्यूली एडवांटेज नहीं परिबे नाही। सपोज आपण रिलायंस कंपनी रे इनसाइडर आपण को इंफॉर्मेशन मिलला कि रिलायंस गोटे नुवा कंपनी किनिबा को जाउची, ता माने कोन? स्टॉक प्राइस आउर इंक्रीज करिवो, कारण गोटे कंपनी गोटे आउटे कंपनी किणुची माने गोटे कंपनी प्रॉफिट रे अछि, दैट कंपनी इज डूइंग वेल, दैट इज द रीजन दैट कंपनी इज परचेजिंग अनदर कंपनी। तो डूइंग वेल माने प्रॉफिट माने ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस आउर इंक्रीज करिवो, पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। तो अनड्यूली एडवांटेज किछि लोक को मिलिबो, जो माने पर इंफॉर्मेशन नाही से माने जानि परिबेनी कोन चलछि। Which of the following markets comprise the secondary market? डिस्कस करिजे मल्टीपल टाइम्स, आंसर करंतु। सेकेंडरी मार्केट, इक्विटी एंड डेप्ट मार्केट्स। इक्विटी एंड जोटा कि हमें सेकेंडरी मार्केट कहूँ, इक्विटी एंड डेप्ट मार्केट। आंसर करंतु। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट? 2016-17 रे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन करा जायतिला, इंट्रोड्यूस करा जायतिला, इंडिया करथिला सेटा। कोंतु ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट रो मेन पर्पस कोन? ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट मु आपन को टिके हिस्ट्री कहि दूची। जो 16-17 रे हेतला, जेतोले हमरो 2013-14 रे आसिला फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अनुसार थिला कोन? सब्सिडीज आमे दउजे का फूड ग्रेन्स रे, जोटा कि एबे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना करी कि सरकार चलैछन। तो जेतोले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंट्रोड्यूस करा गला, सब्सिडीज आमे देले, तो WTO रे डेवलप्ड कंट्री जो माने अछंती से माने इंडिया ना रे गोटे एलिगेशन आनले, इंडिया हैज वायोलेटेड द क्लॉज ऑफ दिस सब्सिडीज व्हिच इज गिवन इन द WTO। WTO रे मेंशन अछि कि डेवलपिंग कंट्रीज गुडी को तांकर जीडीपी रो 10% सब्सिडीज आकार रे देई परिबे, डेवलप कंट्रीज गुडी को तांकर जीडीपी रो 6% सब्सिडीज आकार रे देई परिबे। बट जेतोले ये NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मध्य रे सब्सिडीज दिया गला, तो सेटा 10% रो इंक्रीज करूथला काहारो? इंडिया रो। सेतपई इंडिया वाज ड्रैग्ड टू द WTO फोरम। इंडिया स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। इंडिया कहले कि देखो 40% पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर, 30% पीपल आर डाइंग इन हंगर। सो जदि आपण चाहूचती कि हम लोक माने एमती मरंदु बोली, देन इट्स फाइन, विल विथड्रॉ द सब्सिडी। Then negotiation was like this कि let's introduce one peace clause, and what is this peace clause? कि आपनो for the temporary period of time ये जो 10% आपनो exceed करिसेंती, that will remain or that will be continued. Soon we will come with a permanent solution, जोटा कि आज पर्यंत भी peace clause चलीची, सही 13-14 जेबे तो इंट्रोड्यूस कराला 10 वर्ष गलानी peace clause चलीची। से पीस क्लॉज अगेंस्ट रे हमको गोटे दिया गला कोन? इंडिया ऊपर इंपोज करा गला ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को साइन करबा पई। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट माने कोन ना? ट्रेड विथ अदर कंट्रीज और इंडिया's trade with other countries will be facilitated, और
इज जोटा आम कहीपर रेस्ट्रिक्शंस हो माने जमती डॉक्यूमेंटेशन जमती सिंपल गोटे एग्जांपल आपन को देबी 2010-11 ता पूर्वरु गोटे शिप जेतेबेले गोटे पोर्ट रे आसी की पहुंचे तांगर गोटे टर्न अराउंड टाइम था टर्न अराउंड टाइम माने जो जिनस नहीं कि आसे ताको अनलोड करिवो नुआ लोड करिकि नहीं कि जीवो से हमको लागुथला अराउंड 40 डेज ऑन एन एवरेज तमाने चिंता करंतु केते कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंटेशन काम करबा को पड़तला वर्तमान सेटा ऑलमोस्ट आसी कि हे गेलानी केते 24-25 डेज गोटे दिन पर्यंत हमें करि सालण सेटा ओनली ड्यू टू दिस ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2030 सुधा हमें चेष्टा करछु ताको 20 आवर्स को आनिबा पई कि 20 घंटा भीतर विद इन 1 डे सेटा टर्न अराउंड करिवो तनु सेटा को ट्रेड फैसिलिटेशन बोली कहा जाय तनु आंसर होची कोन आंसर होची टू स्पीड ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय रिफॉर्मिंग custom procedure trade facilitation custom procedure okay B is the correct answer which markets do hedgers commonly use to manage risk hedging hedging आपण जानिते गोटे टर्म अछि रिस्क को मिनिमाइज करबा पई चेष्टा करन juxtapose memories nice name I'm a fresher at a time we should prepare for prelims and mains जदि fresher आपण अछंती you have to prepare both if you are not appearing prelims then start covering syllabus prelims mains सेमती किछ नै you have to cover topic wise जोटा कि syllabus रे मेंशन अछि right anyway तो यार आंसर कोन हबो कोंदु फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट हेजर हेजिंग स्टॉक मार्केट रे जनरली आपण देखिथिबे आजकल बहुत गुडे केसेस आसुची कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करी कि बहुत लॉस करूचन कारण राता राती धनी हबार जो स्वप्न अछि लोकंगर ऑप्शन ट्रेडिंग रे इनिशियली तो स्लाइटली टिके ता आपण को प्रॉफिट जदी मिलला देन से जो निशा लागुची लोकंगु देन दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग उधार उधार करी कि भी इन्वेस्ट करूचन ऑप्शन मार्केट रे सो हेजिंग होची गोटे टर्म जोटा कि यूज करा जाए टू मिनिमाइज द रिस्क नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेजिंग व्हाट इज मेंट इक्विवेलेंट एसेट इक्विवेलेंट एसेट इक्विवेलेंट एसेट सिंपल मन रखता हूं बेटा एसेट दैट डिफर ओनली इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी asset that differ in terms of maturity ठीक अछि next what is the fiscal cliff primarily characterized by important term gote what is the meaning of fiscal cliff answer करन देखो तो फिस्कल स्टिमुलस आपण जानिथिबे फिस्कल स्टिमुलस हम डिस्कस करतेले फिस्कल स्टिमुलस माने कोन पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेबा टैक्स को कम करेबा फिस्कल क्लिफ माने कोन तार सिंपली ऑपोजिट आपण कहि परिबे सिंपली ऑपोजिट ऑपोजिट हेले कोन हबो ना टैक्स को बढ़ाइबा दैट मींस पीपल विल हैव लेसर मनी टू स्पेंड ता सहित कोन ना पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करेबा राइट जोटो आम कौन कहे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आंसर करूँ व्हिच टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड इन बिटकॉइन टू सिक्योर ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शन को सिक्योर करबा पई कोन यूज करा जाए बिटकॉइन मु आपन कहितली डिसेंट्रलाइज्ड तार गोटे फीचर होची डिसेंट्रलाइज कोनसी जेमती हमरो कॉइन एंड पेपर करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड ए सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड आरबीआई ही ताकू पूरा सर्कुलेट को रेगुलेट करूची राइट बट बिटकॉइन होची डिसेंट्रलाइज्ड इंडिविजुअल लेवल रे होची फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग ये जो पेमेंट को सिक्योर करबा पई दिस इज द थिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मन रखते हुए पेमेंट को सिक्योर करबा पई ये जनरली जदि आपण देखिए बिटकॉइन
कॉन्सेप्ट होची बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ठीक अछि बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बट पेमेंट को सिक्योर करबा पई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी नेक्स्ट द टर्म स्मर्फिंग often seen in news related to what the term smurfing answer करिवे the term smurfing एटा मन रखिथिबे स्मर्फिंग माने होची गोटे मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक माने कोन ना जेतोला आपण मनी लॉन्डर करूचंदी या गोटे अलगा हवाला चैनल रे हवाला ट्रांजैक्शन ने पठाउचंदी आपण सेतेबेले एकाथरे के बड़ अमाउंट पठाउ नांती आपण छोट छोट डिनोमिनेशन या छोट छोट अमाउंट रे पठाउचंदी जेन सपोज आपण पाखरे ब्लैक मनी बहुत गुडे अछि राइट ब्लैक मनी को व्हाइट करिया पे आपण बैंक रे डिपॉजिट करिया को जाउछन तो आपण कोन करछन केतेबेले 5000 नेकी गले केतेबेले 10000 नेकी गले केतेबेले 2000 नेकी गले तो बैंक को जंती डाउट होबन आपण दिस 5 करोड़ नेकी गले संगे संग से कोन करिवो पचरिवो कोठो आसला पैन कार्ड दियंतु सोर्स ऑफ इनकम दियंतु तो ई जिंस आसीबो तनु सेही टाइप रो जेतेबेले आपण हवाला ट्रांजैक्शन हवाला चैनल ले पैसा पठाउचंदी स्विस बैंक को से समय मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक एटा जोटा कि स्मर्फिंग बोली कहा जाए मन रखते बेटा ठीक अछि नेक्स्ट with reference to the national milk day consider the following statements यार आंसर आपण करेबे इजी क्वेश्चन it is celebrated to commemorate the inauguration of the operation flood national milk day. The Operation Flood has helped India become the largest producer of milk milk in the world. वर्तमान फर्स्ट रैंक रे किए अछि इंडिया मिल्क प्रोडक्शन रे. Dr. Verghese Kurin is known as the milkman of India. That is again correct. तो आंसर यार कौन हो? नेशनल मिल्क डे केबे सेलिब्रेट करा जाए? मन रखते बेटा को 26 नवंबर 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर एंड वर्ल्ड मिल्क डे एटा होची आपनकर 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून एवं से नेशनल मिल्क डे होची आपनकर बर्थ एनिवर्सरी जोटा अछि आपनकर कार वर्गीस कुरिन कर ताकू सेलिब्रेट करा जाए प्लस ऑपरेशन फ्लड को भी सेलिब्रेट करा जाए तो आंसर होची डी 1213 ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉफी आंसर करंतु कमर्शियल कॉफी फार्मिंग फुली फ्लरिश्ड इन इंडिया after the arrival of the Dutch in the 17th century. In India, the largest share of coffee production is consumed within the country. Karnataka is the largest producer, accounting for about 70% of the total coffee production. India grows Arabica and Robusta varieties of coffee, of which Robusta has a higher market value. Answer करिए. देखो आंसर होची डच आस्थिले 17th century रे कमर्शियल कॉफी फार्मिंग सही समय रे हमको देखिबा को मिले कोठी इंडिया रे बट जदि देखिबे कॉफी को फ्लोरिश किए कला कॉफी रो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल को माने नहीं की गले ऑब्वियसली मिड 19th सेंचुरी रे ब्रिटेन या ब्रिटिश वाला जतले इंडिया रे थिले सने राजनीति करूथले शासन करूथले से माने तको कमर्शियली काफी फ्लोरिश करथले बिजनेस को काफी फ्लोरिश करथले बट इनिशियल स्टेज रे डच 17th सेंचुरी रे कमर्शियल कॉफी फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करथिले नेक्स्ट ट्विन डेफिसिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी माने कोन ट्विन डेफिसिट आंसर करंतु ट्विन डेफिसिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी मन रखते बेटा को ट्विन डेफिसिट होची फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट मन रखते बेटा को
ट्विन डेफिसिट माने होची फिस्कल डेफिसिट आउ करंट अकाउंट डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट माने कोन ना जोटा कि सिंपली आपनकर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, बट रिसिप्ट रे आपण बोरोइंग को माइनस करछनी माने थिबो एटा कांसेप्ट डिस्कस हमें करिचे. नंबर 1. नंबर 2 होची करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट मींस इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ताको हमें कहूचे ट्विन डेफिसिट. Missing women is a concept introduced by. Missing women is a concept introduced by. Missing women माने कौन? जो हमें कहना फीमेल फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या जोटा हमें कहूचे, फीमेल फोर्टिसाइड जोटा कहूचे भ्रूण हत्या, सेटा को मिसिंग वुमेन बोली कहूचे. कॉन्सेप्ट को देइथिले अमर्त्य सेन. मिसिंग वुमेन अमर्त्य सेन. Who is the lender of the last resort in the banking structure of India? Lender of last resort. जेतोले पैसा दरकार थिबो आपनकर बापा को न मागी आपण काहा को मागंती? मां को, मदर, राइट? तेणु who is the mother of all bank in India? जी की lender of last resort, Reserve Bank of India. At the time of crisis, ultimately RBI helps. At the time of crisis, ultimately RBI helps. Correct? Rest is yours. Like, share, comment, subscribe. And yes, all the best. And we'll see in the next video. We'll discuss few more questions. जत्ते पारुचंद रिवाइज करंतु. एवं डोंट गो बाय दिस थिंग. आपन जेमति कहली ओपीएससी रे जेपंत नोटिस आसिनी कैंसलेशन पई कोनोसी चिंता करंतु नै. डोंट डू दैट. ओके, थैंक यू. लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, कमेंट मध्ये करिवे जहा आपनकर इच्छा थिवो. डेफिनेटली कमेंट डेफिनेटली करंतु. आपण टॉपिक्स भी कहि परिवे, को टॉपिक्स नै कि वीडियो आसीबु, को क्वेश्चन डिस्कस करिवो, ऑल दोस थिंग्स यू कैन से. थैंक यू स्वागतिका, and thank you everyone. See you soon. Thank you.